How do you remove body tan ताकि आपकी body भी glow करे like the rest of your face? This has to be one of the most requested topics on the channel, especially in the last 2 months where so many of you guys have been asking for body tan removal. How do you make sure कि आपकी body का color even toned हो? In general, making sure कि आपकी body का skin भी glow करे आपके चेहरे के जैसे. So आज की video dedicated है to a body tan removal routine. How do you maintain the color of your body? How do you ensure कि discoloration ना हो? All under 500 rupees. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. और जैसे कि मैंने कहा, आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू बॉडी टैन रिमूवल इन जनरल, मेकिंग श्योर योर बॉडी इज ब्राइट एंड ग्लोइंग. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल अक्रॉस यूट्यूब एंड आई कैन टेल यू दिस विद गारंटी, जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स, यानी कौन से प्रोडक्ट्स को लगाना है, ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन किस तरह लगाना है, कितना लगाना है, हफ्ते में कितनी बार लगाना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई हैव डेडिकेटेड प्लेलिस्ट. एंटी एजिंग कंसर्न है, एंटी एजिंग देखें. मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है. एक्ने, हेयर केयर, सब चीज़ों की डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स हैं. आपको डिटेल्ड रूटीन्स मिलेंगे. प्रोडक्ट्स मैं खुद लगा के भी दिखाती हूँ. सो ऑल ऑफ दिस विल बी आंसर्ड. सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवंट ऑलरेडी. हेल्प मी रीच 50,000 सब्सक्राइबर. दैट्स लाइक माई न्यू गोल राइट नाउ. ऑब्वियसली I think it's going to take a little longer, but अगर आप सब सब्सक्राइब करेंगे, जो आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से, then maybe I will reach my goal faster. I create new skincare and hair care related content, beauty related content in general now, 4 times a week, Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays. Now let's get into it. पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो पहली चीज़ आपको जाननी है कि डिस्पाइट यूजिंग बॉडी सनस्क्रीन, बॉडी टैन होती है. अगर आप बॉडी सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो बॉडी ज्यादा टैन होगी. बॉडी सनस्क्रीन लगाएंगे तो बॉडी कम टैन होगी. टैनिंग होगी. टैनिंग हैज नथिंग टू डू विद सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द डैमेज द सन कैन कॉज. टैनिंग इज अ डिस्कलरेशन प्रोसेस जो हो जाता है विद सनलाइट एंड एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल एग्रेसर्स. तो इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशली इफ यू गो आउट क्वाइट अ बिट. When I was on a holiday about a month ago, obviously my body sunscreen, face sunscreen, I am supremely regular with my sunscreen, yet my body got tanned and that is normal and that happens. But this is something you can reverse and आप maintain कर सकते हैं अपने body का natural color, and today we're going to talk about it. सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि body तो tan होती है, but body पे sunscreen लगाना बहुत ज़रूरी है. So let me give you a couple of options. As far as I'm concerned, in general, मैं face sunscreens ही body पे लगा लेती हूँ mostly, but I have sunscreens from brands like Nivea, जो उनका body sunscreen आता है जिसमें usually SPF 30 आता है. Winter months में something that I was really enjoying, मेरे को actually PR में मिला था. दीपिका पादुकोण का brand which is 82 East, whatever. So उनके जो पहले 2 product launches थे, which was the face cream and the sunscreen oil, I got it. वीडियो मैंने नहीं बनाई थी. ऑनेस्टली आई डिसलाइक्ड देम सो मच एंड देन दे हैड सेंट इट टू मी इन PR ऑल द वे टू दुबई. तो ऐसे मुझे लगता था थोड़ा मीन हो जाएगा. एंड इन जनरल सब लोग ही वीडियोस बना रहे थे ऑन हाउ बैड द प्रोडक्ट इज. सो आई वाज लाइक सब समझ ही जाएंगे. सो मैंने वीडियो नहीं बनाई. फेस क्रीम वाज ओके, आई काइंड ऑफ यूज्ड इट ऑन माय फेस एंड बॉडी. सनस्क्रीन ऑयल टेरेबल, बट उस सनस्क्रीन ऑयल को मैंने थ्रू आउट द विंटर्स यूज किया एज माई बॉडी सनस्क्रीन एंड आई लव्ड इट. अदरवाइज इन जनरल समर मंथ्स में SPF लोशन नेविया का, दैट इज समथिंग आई लव. इट इज एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट, हर जगह मिल जाता है. बॉडी सनस्क्रीन इज एसेंशियल. सनस्क्रीन स्प्रेज भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, स्पेशली फॉर माई फीट एरिया. आई लव द न्यूट्रोजीना SPF 50 सनस्क्रीन स्प्रे. इट इज फैब्युलस. तो ये है कुछ ऑप्शंस जिसमें आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं. सनस्क्रीन प्लीज बॉडी पे भी लगाइए. इन जनरल व्हाट आई डू पर्सनली इज आई अवॉइड वेयरिंग क्लोथ्स विच आई यूजुअली वेयर फुल स्लीव्स और 3/4 स्लीव्स. हाफ स्लीव्स, रियली शॉर्ट स्लीव्स मैं अवॉइड करती हूँ. सन इज सुपर स्ट्रॉन्ग हियर इन दुबई. सो इन जनरल माई क्लोथिंग इज काइंड ऑफ मॉडेस्ट, सो इन उसमें एक्सपोजर होता ही नहीं है. फॉर माई फीट ऑल्सो आई एम मोस्टली वेयरिंग क्लोज्ड और हाफ क्लोज शूज, बट फिर भी मैं फीट पे सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ. So the first thing, if you have body tan और आपको लग रहा है कि अब तो ये tan हो गया, अब क्या करें? Please continue using your sunscreen. Tons of options, tons in the description box, so do check it out. And in general, I just want to clarify, I don't have any affiliate links, so links मैं डाल देती हूँ because you guys ask for it. But आपको जहाँ से खरीदना है, whatever, जहाँ सेल मिले, डिस्काउंट मिले, better price मिले, please go buy whatever you want from wherever you want. Okay, links are only as a reference. So
So body sunscreen, super important. The second thing you need to know, and this is very important, बॉडी पे टैन हुआ है या सन बर्न हुआ है. बिकॉज अगर आपको बहुत देर तक एक्सपोजर हुआ है टू द सन और you've been at a beach or something, हो सकता है कि आपको सन बर्न हो जाए ना. सन बर्न लुक समथिंग लाइक दिस, जहां बॉडी रेड हो जाती है. अब जब आपके बॉडी पे सन है या सन बर्न है, तब आप ये रूटीन फॉलो नहीं करेंगे. तब आपको सबसे पहले अपने बॉडी के स्किन को हील करना है. सो फर्स्टली आई एम गोना टेल यू इन 2 steps व्हाट इज इट दैट यू विल डू इफ यू हैव अ सन बर्न. बिकॉज इसको हील किए बिना सन टैन का रूटीन आप नहीं शुरू करेंगे, स्किन और खराब हो जाएगी. बिकॉज इस रूटीन में है बहुत सारे एक्टिव्स. सो यू विल नॉट स्टार्ट दिस रूटीन इफ यू हैव अ सन बर्न. अगर आपको सन बर्न है कहीं पर भी, फेस पे, नेक पे, बॉडी पे, बैक पे, पैरों पे, कहीं पर भी, योर बेस्ट फ्रेंड दैट यू विल यूज डेली twice a day will be aloe vera gel. Aloe vera gel is hydrating, so it's a humectant much like hyaluronic acid. तो अगर हल्की गीली बॉडी पे भी लगाएंगे तो it's fabulous. ड्राई बॉडी पे मत लगाएं, थोड़ा सा स्प्रे पानी करके then apply your aloe vera gel. Apply it wherever you have a sunburn. Apply it twice a day and इसके ऊपर आपको लगानी है एक क्रीम. Now my most favorite cream is the one from Nivea. It is the blue tin jar. It is something I absolutely love and that is something that I highly recommend. अगर आपको वो formula बहुत thick लगता है, you can opt in for the Nivea lotion. Very similar but obviously it's a thinner consistency. It's a lotion. You can apply that. Petrolatum, the glycerine, the vitamin E really helps soothe the skin. सनबर्न को यूजुअली डिपेंडिंग कि कितना बुरा सनबर्न है, ठीक होने में इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक 10 days, पर वो ठीक हो जाएगा. नाउ वंस योर सनबर्न हैज हील्ड, दिस इज व्हेन यू विल स्टार्ट दिस रूटीन. नाउ इस रूटीन में सबसे पहली चीज जो आती है, जो आपको करनी है प्रीटी मच हर रात को, and this is a very affordable product, especially if you're in India. If you don't have this product, I will give you alternatives of what I use. The product that you will use is Glycol 6 Cream. Glycol 6 Cream या Glycol 10 भी use कर सकते हैं because this is for the body. You will get this in pretty much every pharmacy. You will get it on 1mg.com, which is online pharmacy, etc. This is under 200 rupees. Glycol 6 को आपको लगाना है at least शुरुआत में हफ्ते में 3 से 4 बार, and then you can start using it every night. This will exfoliate your skin. This is going to gently brighten your skin. So Glycol 6 is something that you will use. लेकिन उसके बाद, क्योंकि Glycol 6 moisturizer नहीं है, so you will take a little more than a pea size amount. Let me show you the amount that you will take as a demo. I'm using a different cream here. कुछ इस तरह से इतना सारा प्रोडक्ट आप लेंगे एंड देन इसको हाथों पे लगा के देन यू विल टेक इट ऑल ओवर. पैरों पे लगाना है, थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेंगे एंड देन यू विल टेक इट ऑल ओवर. सो बेसिकली यू गोना यूज Glycol 6 and that is something that you will use 3 to 4 times a week. If you want, you can use it every single day as much as your skin can tolerate it. This is supremely important when it comes to brightening your skin. और ये चीज आपको करनी है सिर्फ रात को. दिन के टाइम में आप क्या करेंगे? दिन के टाइम में आप यूज करेंगे एक लैक्टिक एसिड लोशन बिफोर यू यूज योर बॉडी सनस्क्रीन. सो द वन दैट आई लव, एंड मैं इसके बारे में दूसरे वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ, इज द टी ट्री लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन बाय डॉक्टर शेथ. सुप्रीमली अफोर्डेबल प्रोडक्ट. इट इज लाइक I believe it's 299 rupees or something like that. It's under 300 and it's very affordable. There are other brands like Bodywise etc. जो मैंने नायका पे देखे हैं, उनके भी lactic acid lotions आते हैं. Sugandha I believe has one, Namely maybe also has one. बहुत सारे ब्रांड्स में लैक्टिक एसिड लोशन है. ये लगाएंगे दिन के टाइम. लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड आर बोथ फॉर्म्स ऑफ AHAs. दे आर ब्राइटनिंग. दे आर नॉट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. सो ये सेरम्स के जैसे नहीं है जिन्हें मैं कहती हूँ सिर्फ हफ्ते में 2 बार लगाना है, हफ्ते में 1 बार लगाना है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज ऑन अ डेली बेसिस. सो दिस इज समथिंग यू विल यूज इन द डे. ग्लाइकोलिक एसिड इज समथिंग you will use at night. After you use your lactic acid lotion in the morning, you will use your body sunscreen. That is essential, supremely essential. Now, if you don't have access to Glycol 6, like I don't have access to Glycol 6, मेरे पास अभी नहीं है, last year ली थी, खत्म हो गई, Amazon UAE पे नहीं मिल रही है. This is what you will do. You will use any glycolic acid toner. Ideally, ordinary का glycolic acid toner जिसमें 7% glycolic acid की concentration है, मैं उसे लेती हूँ, हाथों पे मिक्स करती हूँ और अपने पूरे बॉडी पे
पैरों पे, हाथों पे, everywhere. I slather myself in that toner. It is supremely affordable. Pixie वाला मैं recommend नहीं करूँगी. Number 1, it's more expensive. Number 2, उसमें glycolic acid की concentration कम है. 7% glycolic acid is good if you have access to Peter Thomas Roth, which I believe has 8 or 9% glycolic acid, even better. But generally, the ordinary one is what I slather all over, and उसके बाद I use one cream which is super cheap and super good. It is Parasoft. ये मिलती है आपको Indian pharmacies में. You will get it for like 120 rupees. It is basically soft paraffin. It's basically a paraffin cream. It also has glycerin and vitamin E, supremely hydrating. So ये है मेरा जुगाड़, because if I don't have glycol cream, अगर आपको glycol cream मिल जाती है easily in India, it's quite affordable, go ahead, just use that. Otherwise, you can use this method, which is using a glycolic acid toner all over your body. I do this every single day. I did it every single day when I came back from the US, because obviously उस time पे बहुत ज़्यादा tan था. अब I'm doing it a few times a week, and then maybe I'll just stop, because दिन में any case I'm using lactic acid. Sometimes I switch off my lactic acid. I use it in the evening. You can basically do mix and match combination, but glycolic acid is supremely brightening, and this is something I swear by. If you don't have Parasoft cream, you can use any cream, Nivea, Cetaphil, CeraVe, whatever. जो भी आपके पास hydrating cream का jar या डब्बा है वो use करें. Don't use an oil on top of it, because you're using an exfoliant. You want this to evaporate naturally. Do not use like नारियल तेल after this. कोई भी cream लगा दें and you are good to go. If you follow this routine religiously, morning and evening, so lactic acid lotion in the morning, glycol cream in the evening, do this at least for a few weeks, you will see a visible change in the skin tone. So जो वो tan से आपका skin color change हो जाता है, that will get much lighter. But you need to do one thing more, and that is at least महीने में 2 बार you will get an exfoliating mitt like this from Amazon. These are super cheap, and this is something that you will use to exfoliate your dead skin. Now I know a lot of times people say, oh ये अच्छे से काम नहीं करती, इससे कोई exfoliation नहीं हुआ, this is bad quality, etc. No, they are all exactly the same. Whether you are buying something for 50 rupees or you're buying something for 500 rupees, the material, थोड़ा बहुत quality में फर्क होता है, but the material of exfoliating mitts are same. If it's a good quality, it will last you longer. But anyways, after 4 uses, I think you should chuck it. So you get an exfoliating mitt like this. Now इसको लगाने का और इसको सही तरीके से use करने का process है ये. Firstly, you have to be in a shower, in a warm shower for at least 5 to 7 minutes. So I recommend कि आप ये चीज़ करेंगे तब जब आप head wash करते हैं, because सब head wash conditioning में time लगता है. So your body is really wet. Number 2, गीली बॉडी को आपको हल्का सा पैट ड्राई करना है, सुखाना नहीं है. सो यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट बैलेंस. योर बॉडी हैज टू बी वेट एंड सॉर्ट ऑफ ड्राई, सो इट हैज टू बी डैम्प. जब आपकी बॉडी डैम्प होती है तब आप अपने मिट को पहने, एंड हियर यू कैन सी द डेमो. यू विल देन स्टार्ट स्क्रबिंग इट धीरे धीरे, सॉफ्ट सर्कुलर मोशंस में, रगड़ना नहीं है, स्किन रेड एंड सेंसिटिव हो जाएगी. यू डोंट वांट टू डू दैट. यू विल डू दिस वेरी जेंटली, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डेड स्किन यू हैव, किसी की ज़्यादा होती है तो वो लंबा गंदा सा निकलता है, किसी का कम होता है तो कम निकलता है. बट बेसिकली व्हाटएवर डेड स्किन यू हैव ऑन योर बॉडी इज गोइंग टू कम आउट. And उसके बाद what I do recommend after then you wash it off, then you use your shower gel, blah blah blah, you take a normal bath. उसके बाद what I do highly recommend, and this is something I absolutely love, is अगर आप use कर सकते हैं कोई भी mud mask या मुल्तानी मिट्टी, नीम का पाउडर, you get so many options. यहाँ पे we have access to the Moroccan Nila mask, which I used in my Moroccan bath video. If you haven't seen it, check it out. It is something I love doing at least once in a month. It's a super relaxing thing. So check out this video after this one. But in general, if you don't get the Moroccan Nila mask, multani mitti, neem ka powder, any herbal powder mask, उसको अपने पूरे बॉडी पे लगाएं. It will sort of heal your body, it will tighten your pores. It is fabulous to do, and it is great after you do an exfoliating procedure like this. उसके बाद you are just going to put some hydrating lotion, Nivea का normal lotion, body oil, whatever you prefer. Exfoliation के immediately बाद, do not use your lactic or your glycolic acid. Give yourself 1 day's break. 1 day, 1 night, 24 hours, that's all you need to do. And उसके बाद you are just going to continue with your routine. This dead skin removal process is so life changing, I cannot tell you guys. And अगर आप इसको regularly करेंगे ना,
एंड बाय रेगुलर आई मीन ट्वाइस अ मंथ. इट डजेंट मीन कि आप हर हफ्ते हर 3 दिन में रगड़ना शुरू कर दें. यू विल जस्ट लाइक डैमेज योर स्किन, इट विल बिकम सेंसिटिव एंड यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट्स बिकॉज देर हैज टू बी डेड स्किन फॉर इट टू कम आउट, राइट? सो डू दिस like twice a month. It is life changing and that is really going to help. Sometimes, and this is something I've done previously, I've mentioned it in videos, you can use regular body scrubs. Like Dove has a body scrub, M-Caffeine has a body scrub, and the M-Caffeine body scrub is a really good one. My problem with the M-Caffeine body scrub is that it is so bad for your damn drainage, okay? Like my drains, if I use this regularly, my bathroom drains keep getting clogged and then I have to put all kinds of things in it and like, you know, make sure that the things are flowing. It is bad for your plumbing system, but it's really, really brightening. I have personally enjoyed the M-Caffeine scrub. I've used it for years. It is super brightening and that is something that you can do in addition to the exfoliating one. But in general, अगर आप ये lactic acid, glycol cream और ये वाला system कर रहे हो, you will not need anything more. The only thing that you will need, and this is very, very important, and that is कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं ये सब करने के बाद, प्लीज यू कैन एक्सपेक्ट मोर टैन, मोर डार्कनेस, थिंग्स नॉट गोइंग राइट. सो सनस्क्रीन डिसिप्लिन इज सुपर. ऑल्सो इन जनरल, इफ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड, गोइंग टू वर्क, ड्राइविंग, एंड दिस इज अ बिग वन. लेडीज, इफ यू आर ड्राइविंग, प्लीज कॉटन के ग्लव्स आते हैं, स्पेशली नाउ इन द समर मंथ्स. यू गेट दीज कॉटन ग्लव्स ऑन Amazon, wear them and drive. Also, steering wheel काफ़ी गर्म हो जाता है, you know, गाड़ी खड़ी रहती है. And the other thing is that it is going to protect your hands and you will thank me for it. Just make sure a pair of clean cotton gloves is always in your dashboard. Wear your gloves and do this because जो हाथों की aging और जो हाथ, you know, बुरे से लगने लग जाते हैं, just look so bad, that is something you can really control by just wearing cotton gloves. So that is something which is super important. Now here I want to add one more thing because a lot of you guys have been asking me that हमारे हाथ बहुत aged लग रहे हैं, and हाथों पे it is true, aging सबसे पहले नजर आती है. So if you are also, something that I do and you've seen me do this in my videos, tretinoin मैं यहाँ लगाती हूँ face पे लगाने से पहले, leftover product I always rub like this, right? I rub my hands like this. यहाँ भी tretinoin लग जाती है. But in general, your hands are washed more, they get rubbed more, there is more action, you're using your hands through the day. So yes, your hands are very prone to aging. And one tip that I can tell you, that अगर आपको लग रहा है, if you're above the age of like 40 and you're already noticing कि बहुत ज़्यादा ऐसा issue शुरू हो गया है, start using your tretinoin on top of your hands. उसके ऊपर आप अपनी normal cream लगाएं and you are good to go. Here I want to touch upon one more thing which is a personal issue for me, which is अगर आपके हाथों पे marks हैं. So I am very prone to getting burn marks. Every time I'm in the kitchen and I'm trying to cook something, not every time I'm trying to do something in speed. Like अगर घर पे dinner है और मुझे 4 चीज़ें बनानी है, चारों गैसें on है and I'm trying to do stuff, invariably कुछ ना कुछ हो जाता है. So last month if you noticed my videos, आपने यहाँ पे कुछ brown spots देखे होंगे. अब अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा white हो गया यहाँ पे, right? Because वो skin जो hard होके निकल गई है, so it's left a white mark. And as you can see, I've got a brand new thing here, right? ये oven ऐसे लग गया था. I constantly hurt myself, I constantly get marks, and कभी कभी ये marks थोड़े से dark हो जाते हैं. If you are also like me and you are prone to these kind of accidents and आपको कुछ जल जाता है, लग जाता है, in addition to using your Glycol Cream, what you will use on areas on your hands or your legs where you have these marks, kabhi acne aaya ho, koi mark reh gaya ho, you will use Melashore gel. I have spoken about Melashore gel extensively in my routines for hyperpigmentation and melasma. फेस पे लगाते हैं, थोड़ा सा आप जहाँ जहाँ आपको बर्न मार्क्स हैं वहाँ भी लगा सकते हैं रेगुलरली. उसके बाद अपनी ग्लाइकॉल क्रीम लगाएं, नॉर्मल क्रीम लगाएं, एंड यू आर गुड टू गो. इससे जो आपके डीप मार्क्स पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे. योर बॉडी इज गोइंग टू स्टे ब्राइट, mark free, and that is something I do pretty much on a regular basis because as I can tell you, you know, I keep getting into these little accidents. So these are some simple things, basically 2 things that you need to do morning, evening. Use your sunscreen, exfoliate twice a month, and you will have the brightest, the clearest, the most beautiful body ever. बोनस टिप, अगर आपने कभी भी कोई विटामिन सी सीरम खरीदा, कोई नायासिनामाइड सीरम खरीदा जो आपके फेस के साथ अग्री नहीं किया, और मेरे साथ ये होता है
Sometimes products don't agree with me, and sometimes itne products ho jate hain that I need to finish them off. Use them on your hands and feet. This is something that you can absolutely do because skin to skin hai. So rather than just tossing that bottle out because it didn't work on your face, use it on your feet and you will again have some added benefits in your body care routine. But specially जाके vitamin C serum खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. Not for your face, not for your body. But अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है which sort of did not work on your face, go ahead, use it on your body. You will get better value for your money. You will have brighter skin. Video पसंद आई comments में ज़रूर बताइएगा. What are the other kind of things that you want to say? Also let me know. I will meet you in the next one. Don't forget to subscribe. Help me hit 50,000. I will see you next time. Take great care of yourself. Bye.